Hello kids! Today I have brought very interesting activity of fishing. Yes kids, let's go for fishing. Today I will show you how to do phonics fishing. Yes, you can see one boy here. What he is doing? देखो देखो क्या कर रहा है boy? Fishing कर रहा है. देखो. How many fishes are here? 1, 2, 3 and 4. 4 fishes. और देखो क्या लिखा हुआ है? कौन से अल्फाबेट लिखे हुए हैं अंदर? Oh, you can see letter A, B, C and D. Yes, today we are going to do fishing. Here I have toys for fishing. This rod and I can do fishing like this. Yes, but at home you can use these type of fishes. देखो ये मैंने पेपर से फिश बनाई हैं. A, B and C. हम फिशेस के साथ फोनिक साउंड्स याद करेंगे. Sound of letter A, Sound of letter B, B. Sound of letter C, K. Yes, तो हम साउंड्स बोलेंगे और फिशिंग करेंगे. For this activity you need 2 baskets. आपको 2 baskets लेने हैं. One is big, one is small. So we can revise our concept. Big, small, big, small. And you can use these type of toothpick. देखो मैंने यहाँ फिश बनाया ना, उसमें लेटर लगाया है और उसको हैंग किया है और उसको हम पिक करेंगे टूथपिक से. Yes, like this. Sound of letter C, K, 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 K. हम ट्रांसफर करेंगे फिश को एक बास्केट से दूसरे बास्केट में. Yes, let's enjoy this activity with phonic sounds. Sound of letter B, 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 B. Yes. Now sound of letter A, 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 A. देखो मैंने कैसे होल्ड किया है. 2 finger and 1 thumb. Yes. A, A, A. From this activity, how to hold toothpick with 2 fingers and 1 thumb, and you can also revise and learn phonic sounds. And at school you can do this activity with these toys. Look, letter A. Yes, this way you can do fishing